बड़ा क्या आय कर रहे हैं। संतोष राव भी हमारे साथ न्यूयॉर्क से बने हुए हैं, उनसे बात करते हैं। संतोष, एक तरह से तो ये इट वाज अ गुड सेट ऑफ न्यूज, लेकिन ऑफ कोर्स शायद ये ऑलरेडी प्राइस्ड इन थी। बाजार को अब किस बात का डर है, क्योंकि गोल्ड पोस्ट तो क्लियरली चेंज होता हुआ दिख रहा है। अब गोल्ड पोस्ट इन्फ्लेशन नहीं है, अब गोल्ड पोस्ट है कि रिसेशन होगा, हार्ड लैंडिंग होगी, माइल्ड रिसेशन होगा। व्हाट इज योर रीडिंग ऑफ द मार्केट्स राइट नाउ? Yes, I think the biggest positive मेरे हिसाब से तो कि it gave enough reason to say कि soft landing होने वाली है. There is, in fact, the Fed said that they expect inflation to come down as we go down the year, but recession is definitely their base case is that there is going to be recession. वो पहले नहीं बताए थे, वो बोले थे कि slow होने वाला है, but recession I think was not used as much. But वो तो होने वाला है, but the market expected that. The whole issue was कि the market thinks कि it's going to go beyond that. It's going to be mild, and towards the later part of the year and early next year, things are going to pick up. I think that's what the multiples were saying, 18 times forward, and earnings estimates were saying. But I think now the market people are convinced कि earnings estimates नीचे आने वाले हैं, multiples compress होने वाले हैं. So there is more downside than upside, and that's why the market is selling off. संतोष, तो ये अगर जब इन्फ्लेशन के नंबर आते हैं तो कैलकुलेशन इस चीज़ की भी बिठानी चाहिए कि अब इंटरेस्ट रेट का क्या होगा, क्या उसी स्पीड से बढ़ाए जाएंगे, घटाए जाएंगे? आपका इस पे टेक क्या है? Yeah, definitely. I think interest rates is the key thing. तो ये जो May 3rd meeting है, वहाँ पे 25 basis points तो is already baked in. The big issue is क्या नेक्स्ट सेकेंड हाफ में रेट्स कम होंगे, शायद कट करेंगे फेड, वो तो दैट्स आउट ऑफ क्वेश्चन नाउ. वो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कटिंग. दे विल स्टे देयर एट 5.1% उनका टारगेट था चेयरमैन पावल का, एंड ही इज गोना बी देयर, ही इज गोना स्टे देयर फॉर लॉन्गर and wait and see. The lag effects of all the raises have not been felt yet. Well, that's the big thing. And the curve is very inverted. The job market is pretty resilient. So I think all these things point. I think bank earnings are going to be important starting this Friday. देखना है कि is there a credit crunch? Is there a credit squeeze right now? Are the bank loans dropping? Are the things slowing down? वो सब देखने को मिलेगा. अभी तक तो लग रहा है कि ठीक है सब कुछ. But I think down the road, the market is expecting, based on the commentary and based on all the few companies that have reported, things are going to slow down. Kitna slow down? The base case for S&P 500, the consensus is $220 a share. मेरे हिसाब से तो at least 5% down will bring it to 210. 5% multiple compression will bring it down to 17. So you're looking at 3,500 as a high and 3,200. A 10% revision of the earnings will bring it down to around 3,000. So I think that's the whole issue. 10 to 15% downside from here, based on the projections and what people are saying, what the estimates are saying of the companies. तो earnings recession तो होने वाला है, वो देखना है कितना deep होगा. मॉर्निंग, ये तो बात आपने सही कही कि बैंकिंग के अर्निंग्स जो आने वाले हैं इस पर खास नजर रहेगी, क्योंकि ड्यूरिंग द मार्च मंथ अगर देखें बैंकिंग क्राइसिस जो कि एक बड़ा चैलेंज दिखा ग्लोबल मार्केट्स के लिए, काफ़ी ज़्यादा वो एक परेशानी का सबब बना था. लेकिन नाउ दैट वी हैव द इवेंट्स इन फ्रंट ऑफ अस, US CPI के डेटा भी आ चुके हैं और फेड के मिनट्स भी आ गए हैं, इंटरेस्ट रेट सिनेरियोज कुछ हद तक क्लियर होते हुए दिख रहे हैं, अर्निंग सीजन सामने खड़ा है. तो आने वाले पूरे एक महीने के लिए, मे भी ये कह सकते हैं कि आने वाली कुछ महीनों के लिए ग्लोबल सेंटिमेंट्स, मार्केट्स कैसे ये चैलेंजेस को डाइजेस्ट करेंगे आपके हिसाब से? वही देखना पड़ेगा. आई थिंक द बिगेस्ट इश्यू इज रेंट इन्फ्लेशन. द शेल्टर इन्फ्लेशन अभी भी हाई है, दो मॉडरेट हो रहा है. आई थिंक दैट्स वेयर वहां पे फेड की नजर है. That needs to come down. Even though the economy overall is fine, the labor market is still good. But wage increases are very moderate. But I think overall, I think that if you look at the complete overall picture, I think things are stable, but they're not going to, he's not going to cut rates. He's going to stay there and see कि lag effects आएंगे क्या. तो वही अब देखना पड़ेगा. I think next 2 weeks are going to be very critical leading up to May 3rd, barring any, plus like Warren Buffett said today, there's still a banking crisis looming. अगर वैसा कुछ हो गया, any idiosyncratic event like Silicon Valley Bank
or any other event, corporate real estate market is also very shaky right now. So agar wo sab kuch hua unforeseen, so I think the Fed will reconsider. He said he's data driven, so wo sab dekhenge. But abhi tak to lag raha hai ki he's going to stay there for longer and wait and see what happens. So I think a lot depends on that. We'll wait and see. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने हमको समय दिया, ये क्रिटिकल टाइम है, बहुत अच्छे से आपने हमको सारी बातें समझाई भी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। जल्दी आपसे वापस भी मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।